So we are back to playing in whites, Dharmesh, finally, after a long time. Finally, yes, the best form of cricket is back. Something I've been waiting for. But we're already under pressure of the 9 test matches left. I think we need to win almost 7 or 8. I think somewhere our selection committee or team is playing a different game, or they have a different aim in mind. So I don't know. I can understand Bumrah's ruling out. वो कुछ इंजरी बोलो या फिर फिटनेस जो भी उसका इशू है, that he is preserving himself, that's fine. I don't understand Saransh Jain's inclusion while you are leaving out a perfectly good all-rounder like Akshar Patel. I don't know whether he is not available for test matches. Are we not considering him for test matches? They've started overlooking him for test matches, I think, lately. But what sense does that make? And you're getting somebody who's 33 years old to replace or to put, I don't know. I think he's done well in domestic cricket, so finally they realize they need to reward domestic cricket. It's too late, no? Or it's too forced. I would say, अगर आपको 33 की एज तक पता नहीं चला कि ये बंदा टैलेंटेड है या नहीं है, तो शायद वो नहीं है. मेरे लिए एक अच्छी बात है कि बाय डिफॉल्ट हाँ, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर तीनों इंजर्ड है. I mean, it's wrong to say it this way, but injured होने की वजह से there was a headline which said huge blow to India's test match squad. ये तीनों इंजर्ड है. मैं बोला huge blow, ये तो इसी को तो blessing in disguise बोलते हैं. But see, that is the sad part, no, Vishal. I would have rather wanted them to be dropped. No, they will walk back once they're okay. हाँ, ये तो वापस आ जाएंगे जब ठीक हो जाएंगे. And so anyway, okay, coming back to see, we have Jadeja को retain किया, बहुत अच्छी बात है. You know, I would want. If you look at the, I think even now, if you ask me, if they select well, look at your top order: Gill, Jaiswal, Padikkal, Sai Sudarshan, KL Rahul, Jurel, Pant. I mean, ये आपका batting lineup है. This is a good batting lineup, यार. This is not a bad batting lineup by any stretch. But Pant और Jurel दोनों नहीं खेल सकते ना, दोनों को कीपर बना के. That's why I said selected well. You can't get both. नहीं, but दोनों की जरूरत भी कहाँ है? If you play, KL राहुल भी है, अगर चाहिए तो उसको भी कीपर बना सकते हो आप. तो गिल, जायसवाल, साई सुदर्शन, KL राहुल, पंत, ये 5 भी आ जाते हैं ना. अब साई सुदर्शन भी ले लो तो ले लो, 6 आ गए, आपका बहुत है. This 6 is a very good top 6 for you. You are followed by Jadeja at 7. And then you have Siraj, Kuldeep. But though I think Prasad Krishna is reflecting in the squad. But I don't know why I felt that he's injured. But Harshit Rana and Washington Sundar for sure are. See, I would have, if you ask me bowling side, since you're talking about the bowlers, मैं लेता मुकेश कुमार को, मैं लेता आकाशदीप को. आकाशदीप कहाँ चला गया? How have they just? These are the bowlers. Akashdeep, Mukesh Kumar. These are the guys. And for whatever it's worth, I would have kept Arshdeep in the squad unless he's injured, which I don't think he is. But now with Bumrah not being there, I feel it is absolutely critical to play both Jadeja and Kuldeep. वो बहुत critical है. Definitely. Which is why I'm saying कि आपने सारांश जैन को लिया क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा फिर? वो ऑफ स्पिन बैट या तो आप उसको बैट्समैन के लिए ले रहे हो, बैटिंग के लिए ले रहे हो, which makes ये वही माइंडसेट है कि जैसे वॉशिंगटन सुंदर को ले रहे हो ओवर कुलदीप, ये वही हो गया वापस. Yeah. But with Bumrah not being there, I think the India's ability to take 20 wickets in Sri Lanka is going to be difficult. Sri Lanka is playing reasonable cricket. Nowadays, they have a fair amount of experience. I think something which we are seeing in the West Indies cricket team also, मार खा के ये लोग ने इतना experience ले लिया ना, अभी it is not going to be a cakewalk. Which is why I'm saying आकाशदीप को कैसे नहीं लिया, मुकेश कुमार को कैसे नहीं लिया? These are. आकाशदीप को नहीं लेने का तो सेंस ही नहीं है. I agree with you. More so the Bumrah नहीं था, so they've taken Akib Nabi. Again, they're saying they're rewarding domestic performance. अगर वो बात है, तो फिर आप नबी, ब्रार और सिराज को लो. प्रसिद्ध कृष्णा ने तो दिखा दिया ना, मतलब अब हो गया ना. कोई मतलब नहीं है. हाँ, absolutely. He's played 7 टेस्ट मैचेस, 25 विकेट लिए हैं. उसका एवरेज पर नहीं है. ये डोमेस्टिक सीजन के हिसाब से तो नहीं है. डोमेस्टिक सीजन के हिसाब से लेते तो हर्ष दुबे को भी लेते. उसका डोमेस्टिक सीजन का रिकॉर्ड देखो. He's been taking wickets every match. He's taking wickets. Because nobody wants Prasidh Krishna to be in the team, so Gautam Gambhir has to take him in the team. ना उल्टा नहीं. I don't know if Gambhir is thinking right or he's even thinking God knows. So
No, but now they don't have an excuse के हमको ये bits and pieces, because when you have Gill, Jaiswal, Padikkar, Sai Sudarshan, Rahul and Pant and Jadeja as your top 7, बॉस अगर ये टॉप 7 आपकी बैटिंग बचा नहीं सकते तो फिर आपको वैसे भी कोई बचा नहीं सकता. Only one change I would have made, because we've seen Sai Sudarshan given enough chances. I think Abhimanyu Ishwaran should have been given a chance instead of in his spot. Yeah, but for some reason because Sai Sudarshan को हम देख चुके वो नहीं कर पा रहा है परफॉर्म. एक मैच खेल लेता है थोड़ा सा फिर वापस नहीं कर पा रहा है. I think Abhimanyu Ishwaran should have been given that chance. Some reason Gautam Gambhir wants to stick with him. और अभी ये स्क्वाड को आप लेस एक्सपीरियंस नहीं बोल सकते हो. शुभम गिल इज over 45 plus test matches. Jaiswal is close to 30 test matches. KL Rahul is close to 70 test matches. Rishabh Pant has 50 test matches. ये कोई हिसाब से less experienced squad नहीं गाने जाए. Jadeja has 89 test matches. नहीं, absolutely, absolutely. And there are two more names which I don't think कि उनको लेना चाहिए था, whatever, but they will be feeling missed out strongly. One is Rajat Patidar और दूसरा Shreyas Iyer. I'll tell you why Shreyas Iyer I'm saying, because I don't know whether are we looking at making somebody an all format player or no. Gill है, Gill पता नहीं अभी तीनों. I don't know. See, I think that the problem is just Shreyas Iyer want to be an all format player. I don't think he does. I think वहाँ पे issue है धर्मेश. Here I will not blame the selection committee. No, I'm not. That's why I said I don't want them to be there. I'm saying these two will be feeling. Rajat Patidar भी सोच रहा होगा कि मेरे को क्यों नहीं मिला चांस, मिलना चाहिए था. हाँ, but purely as a batsman in that top 7 breaking in is going to be difficult, to be honest. अभी वो जहाँ पे break in करना चाहिए T20 में, ODI में, वहाँ पे नहीं कर रहा है, कर पा रहे हैं. वहाँ उसको चांसेस दे रहे हैं, इधर कहाँ देंगे? यहाँ तो जगह ही नहीं है वैसे भी. नहीं. India's batting is decent. Let me be. I think, and this is Bumrah, of course, is a huge blow. But otherwise, this is a reasonably experienced squad. यार अभी वो कुलदीप को नहीं खिला के भी 18 टेस्ट मैच तो खेल चुका है. Even this one, Siraj has 45 plus test matches. So this is a good experience side. No, but Siraj के साथ है ना, वो आकाशदीप होना चाहिए था on the other end. See, उसके सामने कोई bowling करने वाला होना चाहिए ना. Siraj अकेला थोड़ी मैच जीतेगा. उसको support चाहिए. The problem with India, इस lineup में कोई भी नहीं है. Yeah. And the problem with them is इनको दोनों जीतने हैं. There is no question they can draw also. Yeah, absolutely. Abhi, not that they can blame anyone else. They themselves have reached this position because of their own performances. Yeah. But having said that, अगर ये टीम दोनों ना जीते तो क्वेश्चन ये भी तो उठना चाहिए कि यार अब तुम श्रीलंका को श्रीलंका में नहीं हराओगे तो वैसे भी आप क्या ही WTC फाइनल लाने की बात करते हो. Yeah, absolutely. One big comeback I would call it, because he's not been around, is Rishabh Pant. He needs to prove himself as a match winner. I mean, he is. Test में he is. अभी अफगानिस्तान में भी तो उसने रन मारे ही थे ना. हाँ. नहीं, that's what I'm saying. He is, but क्योंकि he's been outside. अभी वो T20 में भी नहीं select हुआ था, वनडे में भी. So यहाँ पे उसको कुछ करके दिखाने का मौका है जो well deserving है और उसको मिलना भी चाहिए. But now he needs to. I think he'll do it also. Yeah. I think at this point in time, Pakistan and West Indies are last with 6.67 and 22.73 percentage points. India is at 5th with 48.15. Bangladesh is ahead of India at 58.33, but anyway, they've just played 4 matches. यार ये परसेंटाइल का रूल मेरे को फिर भी अभी भी नहीं जचता है, बट ठीक है, वो दैट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर डे. वो जो परसेंटाइल वो लोग हाउ दे डिस्ट्रीब्यूट, बिकॉज़ नंबर ऑफ मैचेस हु इज प्लेइंग दैट हैज टू बी आल्सो टेकन इनटू अकाउंट, और हाउ मच परसेंटेज इज दैट टेकन इनटू अकाउंट, आई डोंट नो. नहीं, आई थिंक दैट इज टेकन इनटू अकाउंट. बट अभी देखो, आई मीन ऐसा भी नहीं ना, इंडिया तो हारा हुआ ही है. 9 में से 4 हारा है, 4 जीता है. सो ये ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी 48.15. हां, बट तो वो हिसाब से तो जितना कम खेलो उतना बेटर है. अब 3 खेलो, तीनों जीत जाओ, 100% रिकॉर्ड, उसके बाद खेलो ही मत. ऐसा थोड़ी होगा यार. हां, बट आई थिंक बाय द एंड ऑफ द चैंपियनशिप दे विल बी, सी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये सबसे ज्यादा खेलते हैं अभी. इसमें इस लाइनअप में भी 11, बट टू बी फेयर आई थिंक वेस्ट इंडीज ने 11 टेस्ट मैच खेले हैं ऑलरेडी. इंग्लैंड ने 13 खेले हैं. इनफैक्ट इट इज ऑस्ट्रेलिया हु हैज प्लेड ओनली 8, साउथ अफ्रीका 4 एंड इंडिया 9. So in this round of the WTC, there are others who have played. West Indies ने काफी टेस्ट मैच खेले हैं. The thing is, इंडिया के लिए जो प्रॉब्लम है ना, 2 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड में है. अब वो उनको वो 2 भी जीतने हैं. वो तो एक भी जीत गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी. दोनों नहीं हारे तो बहुत बड़ी बात है. हाँ,
तो अभी दिक्कत ये है कि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 है. If you want to have that leeway of winning 3-0, you can have that only if you win all these 4. 2 versus Sri Lanka and Yes. 2 New Zealand. Which self is श्रीलंका में आज भी हराना इजी नहीं है. नहीं, and in any case, like from WTC point of view, तो इंडिया का स्कोप बहुत, उसको हर एक मैच जीतना ही है. इट्स लाइक अ नॉकआउट. सो वो बहुत ही डिफिकल्ट है, अपहिल टास्क है वो. So, but nonetheless, I think I would still I would be very positive about a 1-0 here. I think we should get a 2-0, but अभी देखते हैं क्या होता है. Would get to 2-0 होना चाहिए. बॉलिंग के ऊपर है. See, 20 wickets I लेने would की. be confident of a 2-0, but ये also I'll tell you the one thing that gives me confidence is because Sri Lanka has turning tracks and we have good spinners. Otherwise, bowling हमारा बहुत weak है. 20 wicket लेने के. play them. You play them. वो अगर बाहर बैठे रहे, अगर कुलदीप को बिठा दिया तो मतलब नहीं है. See, because again, if they go by the fact कि मानव सुतार ने अफगानिस्तान के खिलाफ विकेट लिए और कुलदीप को बिठा दो, then that is useless. That is useless. That is really stupid. I mean, if you have to do that, then you play Jadeja, Sutar and Kuldeep and just play 2 fast bowlers. At this point, I'm also thinking कि जैन को कराएंगे क्या वहाँ पे, वो देखने लायक होगा. या तो उसको बैटिंग के लिए लेके जा रहे हैं या बॉलिंग के लिए लेके जा रहे हैं या क्या करने के लिए लेके जा रहे हैं. Let's see. So we'll have to all wait and see. Playing 11 में आता है नहीं आता है, because a 33-year-old debutant itself is a पता नहीं जोक है वो. So देखते हैं क्या. Nonetheless, I think we should connect again after the first match. Hopefully जीतने के बाद in the next episode. Yeah, and there is an interesting series going on between West Indies and Pakistan. Yes. I'm following that. I think we'll do one episode on that once the second match is concluded. Okay. ठीक है. See you, Vishal. Cool. Thank you. Bye.